5,000 shares of rupees 10 were issued at par, payable rupees 4 on application, 3 on allotment, 3 on final call. 8,000 shares were subscribed. Applicants of 500 were rejected. Applicants of 1,000 shares were fully allotted and remaining were allotted on pro rata basis. Now let us first analyze this sum. Application received कितना था? 8,000 shares पे 4 रुपए, 32,000 आपको मिले. उसमें से 500 शेयर्स जो है उनको रिजेक्ट किया गया. 500 into 4, that is 2,000 shares are rejected. I mean the money is rejected and refunded. Then this 1,000 shareholders, they have got 1,000 shares. They were fully allotted. Fully allotted म्हणजे जितक्याच application है तितका allotment के लिए जितना apply किया था 1,000 share को उतना ही उनको मिला है 1,000 shares. और बाकी बचे, अब देखो 8,000 में ये 500 चले गए 7,500, 1,000 चले गए 6,500, बाकी बचे 6,500 शेयर होल्डर्स. इनको मिलेंगे 4,000 शेयर्स क्योंकि 1,000 तो इधर ही अलॉट हो गया है. Now this 2,000 is refunded. This 4,000 is fully transferred to capital account. Now here amount received is 6,500 into 4, 26,000. But we are going to transfer only 16,000 because we can allot only 4,000. टोटल इशू ही 5,000 का है, उसमें से 1,000 इधर अलॉट कर दिया आपने, बचे 5,000 अलॉटमेंट में, वो इधर हो जाएंगे. ओके, अभी इसमें एक्स्ट्रा बचेंगे 10,000 रुपए. This 10,000 will be used for allotment. Now when allotment is due on this 1,000 shares, allotment is due for 3, that is 3,000 rupees. And on this 4,000 shares, allotment due is rupees 3, that is 12,000 rupees. But this 10,000 will be adjusted here. Remaining 2,000 will be brought in cash by the people, the shareholders. This is called as pro rata allotment. जो एक्सेस मनी है वो आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे. आपको अलॉटमेंट में मिलने चाहिए थे 12,000, ये 10,000 इधर से एडजस्ट हो जाएंगे और ये 2,000 वो लोग एक्सेस लेके आएंगे. अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल वो भी 3 रुपए का है, तो उसमें तो कुछ नहीं, ये 1,000 का 3 रुपए, 3,000 आ गया, ये बैंक से आएगा. और ये 4,000 पे 3 रुपया, ये 12,000 भी बैंक से आएगा क्योंकि अब तो कुछ पैसे बचे ही नहीं है जिसको एडजस्ट करना है. Okay, now we'll pass our entries. Now the entry will be application received. So bank account, debit to equity share, application account. So you have received 8,000 shares, 4 rupees per share, 32,000. Now, how are we going to use this 32,000? We are going to refund 2,000, 4,000 is transferred to capital, 16,000 is transferred to capital, and remaining is adjusted against allotment. So it will be equity share application account debit to bank account 2,000 to share capital. You have issued 5,000 shares of rupees 4 each just now. That is to complete 20,000 will go here. And to equity share allotment
This remaining 10,000 will be adjusted against allotment. So this is being some shares rejected and refunded. Some are allotted on pro rata basis and the excess money is adjusted against allotment. Now next, allotment due. Equity share allotment account debit. To equity share capital account. So this is total कितनी ड्यू है allotment पर 5,000 पे 3 रुपया 15,000 ड्यू है. उसमें से ये 3,000 तो आ ही जाएंगे कैश में और ये 2,000 और बाकी के 10,000 तो एडजस्ट हो रहे हैं. तो only 5,000 will come in cash. So your entry will be bank account debit to equity share allotment account. This is 5,000. Actually, you have to receive 15,000, but 10,000 is already adjusted. 10,000 ऑलरेडी हम लोगों ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो आप सिर्फ आपको 5,000 ही चाहिए एक्स्ट्रा के जो आ गए. Now after that, first and final call due. So the entry will be equity share first and final call. It is 5,000 shares, 3 rupees. That is 15,000 is due. And you will receive the entire money. So it will be bank account debit. यहाँ पे कोई adjustment करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी कोई excess पैसा बचा ही नहीं हमारे पास जो हम लोग adjust करेंगे. तब 10,000 बचा था तो हम लोगों ने allotment के against डाल दिया था क्योंकि pro rata arrangement था. यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे 15,000 रुपए वैसे के वैसे आ जाएंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. Is it done? This is how we are going to make the pro rata arrangement. Some are refunded, some are fully allotted, and some are allotted on pro rata basis. Now let us take this sum. 5,000 shares of rupees 10 each payable as rupees 4 on application, 3 on allotment, and 3 on final call. Applications were received for 30,000 shares. 2,000 were refunded and remaining allotted on pro rata basis. Pass the necessary entries. Now let us see, we were supposed to receive only 5,000 because we have issued only 5,000 shares, but we received 30,000 application. 30,000 into 4. 1,20,000. Out of this, we have refunded 2,000 shares into 4. That is 8,000 is refunded. So remaining are 28,000 shares. And to this applicants of 28,000 shares, we are allotting only 5,000 shares. So the pro rata ratio is 28:5. अब इनको 28,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से मिले कितने हैं? 1,12,000. और अभी कैपिटल में कितने जाएंगे? 20,000.
remaining is 92,000, which will be adjusted against allotment. Now, allotment is due on 5,000 shares, 3 each, that is 15,000. Still, there will be money left with you in excess. तो ये 15,000 अभी माइनस हो गए 92 से, तो भी 77,000 बच जाते हैं. अब वापस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा 5,000 शेयर पे 3 रुपए का, वापस 15,000. वो भी पूरे के पूरे एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो प्रो रेटा अलॉटमेंट किया था. तो हम लोगों ने देखा कि भाई हम एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं, तो जो पैसा हमारे पास ही रख लिया, उसमें से हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा निकाल लिया. फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी अगर पैसा निकाल लूं मैं, तो भी 62,000 रुपीज बचते हैं. अब तो कॉल्स भी सारे हो गए, तो यू विल रिफंड द 62,000 rupees. Now what has happened is you have received 1,12,000, out of which 20,000 is for application that you have used. Now 92,000 में से 15,000 अलॉटमेंट के हैं, वो भी यूज हो गए. वापस पैसा बचा, हम लोगों ने वापस 15,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी निकाल लिया. अब तो 10 रुपए भी आ गए पूरे के पूरे, फिर भी पैसा बचा हुआ है, वो रिफंड हो जाएगा. Now we'll pass the entries. Now the first entry is you have received the application. It will be bank account debit to equity share एप्लीकेशन अकाउंट. अब लोगों ने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते. तो ये कितना हो गया है? 1,20,000, 30,000 shares into 4. Now we will transfer this application money to share capital. Entry will be equity share application account 1,20,000 shares to equity share capital. ये हो जाएगा. सिर्फ कैपिटल को कितना जाना चाहिए था? बस 20,000 रुपए. फिर हम लोगों को उसी में से एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, तो वो भी हम लोग कर लेंगे. टू इक्विटी शेयर allotment, because you have excess money, so you are allotting 15,000. Then to equity share final call, ये भी 15,000 एडजस्ट हो गए. अब बचा कितना? ये 8,000 आपको रिफंड करना है और ये भी 62,000 रिफंड करना है. Because even after adjusting for allotment and the final call, now all 10 rupees on this 5,000 shares are paid. Still we have excess money, so it will be refunded. It will be to bank account. ये 62 और ये 8 ऐसे मिला के 70,000 आप रिफंड कर देंगे. देखिए टोटल मैच होनी चाहिए 1,20,000 से. 15, 15, 30, 70, 1 lakh, 1 lakh plus 20, 1,20,000. This is matching. Now you have already shown that you have received the money on allotment and final call. क्योंकि आपको एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिले, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, तो आपने सारे कॉल्स उससे निकाल लिया और बाकी का पैसा उनको रिफंड कर दिया. Now what will happen about allotment? I will only show that it is due. I will say equity share allotment account to equity share capital. This is 15,000. But I will not pass entry of receiving this money because I have already received the money, already transferred it. Okay. Then similarly, final call is also due, but you will not receive any money. So your entry will only be for due. So it is equity share
Final call account debit. To equity share capital account 15,000. रिमेनिंग अमाउंट आपने वापस कर दी है, इनको ड्यू दिखा दिया, इनको रिसीव दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, हो गया। These are the entries.